Hello students, in this video I am going to discuss solution of a JEE Advanced 2024 question which is related to electromagnetic induction or EMF induced. See this in this question there is a triangular region in which there is a uniform magnetic field and there is a triangular conducting loop. This is the location at t equal to 0. Now it is moving in this direction with constant velocity. So it enters into the magnetic region and then exits this region. So question that has been asked is plot EMF induced versus uh, x displacement of the this conducting loop in x direction. So EMF versus x हमें plot करना है. यहाँ पे x direction ये दिया हुआ है. This is the x direction. So that we have to plot. See, this question can be done in various ways. See, the question is, see, some graph are given, okay, 4 graphs. We have to figure out which graph is correct, okay. So graph can be figured out very easily, okay. But here, I'm going to solve this question in detail and I'm going to provide a short solution basically, okay. So, see, obviously we know that this question can be done by calculation of flux and by differentiating flux, okay, but I'm not going to use that method. I'm going to use here motional EMF, concept of motional EMF here. So you can do it by flux calculation and by differentiating the flux. Okay, that is also definitely a method, but here let's do it by concept of motional EMF. So let's assume that at some time t equal to t, this triangular conducting loop has moved to this position. Okay, so now its vertex is at distance x from this y-axis. So its displacement is basically x. Now you see here, the whole portion of this triangular conducting loop is outside the magnetic field except this portion. इतना portion सिर्फ magnetic field के अंदर है, ठीक है? तो EMF जो motional EMF develop होगा वो इसी portion में develop होगा, okay? So actually, since magnetic field is uniform, तो ये एक्चुअली इसमें जो EMF डेवलप होगा वो इस लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि EMF सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेंथ पर डिपेंड करेगा. तो ये लेंथ को मान लो L1 कह देते हैं. See, this portion is inside the magnetic field, so this length is L1. तो यहाँ पे जो EMF होगा, EMF that will be equal to VB and L1. Simply this is the, so this L1 we have to calculate, okay. And since it is entering into magnetic field region, flux is increasing. So when flux increases, we write EMF to be negative. So let us put a negative sign here. Okay. तो यहाँ पे आप देखिए, ये L1 हम लोग इसलिए calculate कर सकते हैं, ठीक है? This length is x, so this half length will be x by 2. So we have a triangle like this. This is L1 by 2. This is x by 2, and this angle is 30 degree. Okay. So therefore, if we use tan 30 degree, this will be equal to L1, this is L1 by 2. We have written here L1. So this is L1 divided by 2 and x by 2. Okay, tan 30. So 2 and 2 will cancel out. So you will get here L1 is equal to x divided by root 3. Okay. So value of L1 we have obtained. So EMF can be written as VB and here x divided by root 3, and there is a negative sign here. Okay. So that is the value of EMF. Okay. So if you plot the EMF versus x, okay, EMF versus x here, sorry, this is EMF. So this is negative actually. So we get, the plot will be something like this, okay. And this graph will continue like this up to distance L. Okay. See, actually this length is given to be L. Okay. So this loop continues to enter into the magnetic field region until this vertex has moved a distance x. Okay, so when displacement of this vertex becomes equal to L, then it starts exiting the magnetic field region. Okay, so up to displacement L, graph EMF will be given by this formula. Okay, but when this vertex comes to this position, it actually starts exiting the magnetic field. So therefore, in that case, this formula will not apply. So we'll have to apply. So we will have to develop another formula. Okay. तो जब ये enter कर रहा है इस triangular region में, उस केस में तो बस EMF यही होगा. ठीक है? That's the EMF. So now let's consider another case. Okay, when it starts exiting the magnetic field region. So let us. So here I am showing.
position of triangular loop, okay, when its vertex has exited the magnetic field region. Okay, so with respect to y-axis, its displacement is x here. Okay, यहाँ से यहाँ तक का length l है, तो ये length हम लोग निकाल सकते हैं easily. This length will become equal to, let us call it x primed. Okay, and this will be equal to basically x minus l. Okay, so that we'll use later on. Okay, this whole thing is x, and here to here it is l, so this will be x primed minus x primed is equal to x minus l. Similarly, this will also be x primed. Okay, that is equal to x minus l. All right. Now you see the portion of this moving conducting loop which is inside the magnetic field is this one. This portion is inside. So this, let us call this length as L2. And see, this portion is inside and this portion is inside. Okay, ये portion और ये portion अंदर है. तो एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जब कोई लूप कोई वायर है, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर, इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर. तो हियर इन दोनों एंड के बीच में जो ईएमएफ डेवलप होता है वो VBL होता है. ठीक है ना, VBL, वेयर L इज लेंथ. ओके, बट सपोज ए वायर इज मूविंग समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज स्लैंटिंग एंड इट इज मूविंग लाइक दिस. ओके, तो इस केस में जो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होता है ना, वो क्या है कि आप यू फॉर्म ए ट्राइंगल लाइक दिस. ओके, ये ट्राइंगल आप फॉर्म करेंगे, तो ये जो लेंथ होगा ना, दैट एक्चुअली कम्स, दिस लेंथ सर्व्स एज L नाउ. ओके, सो ईएमएफ अगर हम VBL लिखते हैं तो उसमें ये लेंथ अब यूज करना होगा. ठीक है ना, दिस कैन बी प्रूव्ड एक्चुअली, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट प्रूफ हियर. सो हियर यू सी ये लेंथ L2 है, तो यहाँ पे इस पोर्शन में जो ईएमएफ डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू VBL2 हो जाएगा. ठीक है, इस पोर्शन में जो ईएमएफ डेवलप होगा और इस पोर्शन में जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको निकालने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा और ये लेंथ कंसीडर करना होगा, दिस लेंथ, बिकॉज वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये लेंथ है. यहाँ पे भी देखिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये लेंथ है. सो वी विल हैव टू कंसीडर दिस लेंथ. सो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ विल बी एक्चुअली इक्वल टू दिस होल लेंथ. ओके, तो लेट अस कॉल इट L3. तो यहाँ पे देखिए इस पोर्शन और इस पोर्शन में जो टोटल ईएमएफ डेवलप होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू VB और इनटू L3. So L3 is actually this much length, this, because this length and this length will be same. Okay, and this will be half of this. Okay, तो यहाँ पे ये जो टोटल लेंथ है L3, okay, वो बेसिकली EMF इन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. अगर स्लैंटिंग ये वायर है और ये V स्पीड से मूव कर रहा है तो EMF जो होगा VBL ही लिखेंगे, मगर लेंथ ये होगा अभी यहाँ पे. ओके, वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड वी आर अज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म. ओके, तो इसमें VB ये L3/2 हो जाएगा, इसमें VB L3/2, तो इसमें टोटल इन दोनों का सम जो EMF का होगा वो इतना होगा. ओके, नाउ जैसे मोशनल EMF के केस में, जैसे यहाँ पे EMF डेवलप हो रहा है, यहाँ पे EMF डेवलप हो रहा है और यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो अगर हम टोटल करना चाहते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा पोलैरिटी का ध्यान रखना होगा. जैसे EMF हम लोग जानते हैं कि V कैप क्रॉस B कैप जो है ना, दिस एक्चुअली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी. ओके, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो V क्रॉस भी आप ऐसे करेंगे, थंब इधर आ रहा है, तो एक्चुअली पॉजिटिव पोलैरिटी देखिए यहाँ पे दिस एंड विल बी पॉजिटिव एंड इस पोर्शन की बात करें तो ये एंड नेगेटिव होगा. इसमें V डाउनवर्ड है, B अपवर्ड है, तो V क्रॉस भी मतलब राइट एंड जो होगा ना, राइट साइड वाला पोर्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा. यहाँ पे पॉजिटिव एंड ये होगा, ये नेगेटिव. यहाँ पे V क्रॉस भी ऐसे कर रहे हैं, V इधर है, B ऊपर है, V क्रॉस भी करने से ये एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. नाउ टू बी कंसिस्टेंट विद साइन कन्वेंशन डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे V इधर है और B अपवर्ड है, तो V क्रॉस भी करने से ये एंड यहाँ पे पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ओके, वो पॉजिटिव, मतलब दिस पोर्शन विल सर्व लाइक ए सोर्स ऑफ EMF. ओके, एंड इट विल सेंड करंट इन द सर्किट लाइक दिस. ओके, तो दिस विल बी द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, तो ये करंट का डायरेक्शन है यहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हम लोग देखिए यहाँ पे करंट जब ऐसे करंट इट इज सेंडिंग करंट क्लॉकवाइज. ओके, तो क्लॉकवाइज करंट जब सर्किट में फ्लो कर रहा है तो हम EMF को नेगेटिव ले रहे हैं. सो आई विल टेक दिस कन्वेंशन व्हेन दिस इज सेंडिंग क्लॉकवाइज करंट. ओके, दिस सोर्स ऑफ EMF इज सेंडिंग क्लॉकवाइज करंट, देन वी आर टेकिंग EMF टू बी नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे करते हैं. देखिए यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज दिस पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, दिस विल ट्राई टू सेंड करंट इन दिस डायरेक्शन. Okay, this will try to send current in this direction and this will try to send current in this direction. Okay, in this direction. ठीक है, positive terminal to negative terminal like this. Okay, so this source of EMF, यहाँ पे जो EMF डेवलप हो रहा है वो करंट ऐसे सेंड करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो EMF डेवलप हो रहा है ना वो ऐसे करंट सेंड करेगा.
ठीक है ना, clockwise, and it is also trying to send current clockwise, okay, like this, okay. तो ये दोनों का ईएमएफ को हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी करंट देखिए क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था, तो ईएमएफ को नेगेटिव लिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन हम इन दोनों का ईएमएफ यहाँ पे इसका और इसका नेगेटिव लेंगे, तो इन दोनों का जो ईएमएफ का सम है, ओके, वो एक्चुअली VBL3 होगा, VBL3 वेयर L3 इज दिस लेंथ, ओके। तो इसीलिए इस केस में जब हम ईएमएफ निकालेंगे ईएमएफ, तो हम इस ईएमएफ को पॉजिटिव लिख देंगे VB और L2, और ये ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा VBL3, ठीक है। सो देयरफॉर VB और दिस विल बिकम L2 minus L3. So if we just calculate this length and this length, okay, L3, then we will get the answer, okay. So let us calculate this length, okay. तो ये देखिए x primed है, this angle is 30 degree, ठीक है। So this यहाँ पे एक triangle ऐसे बन रहा है, okay. So in this triangle, if we calculate tan 30, you see tan 30, then we will get here, this is L2 by 2 and divided by this is x prime, okay. So therefore tan 30 is 1 by root 3, so we get here L2 is equal to x primed 2x primed or divided by root 3, that is L2, okay. तो ये L2 हो गया, ठीक है। Now you see we have to calculate L3, okay. So this is L2, so this is also L2 actually, ये दोनों equal है, this is also L2 here to here, this is also L2, okay. Now if you want to calculate L3, so half of the side of the triangle में से L2 by 2 minus कर देंगे तो L3 आ जाएगा. So therefore we are going to get here L3 is equal to half side of the triangle is suppose A by 2 or minus this will be half of L2, okay, L2 by 2. So this is going to be, so that's the L3, okay. तो ये L3 का वैल्यू आ गया. तो इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो EMF इक्वल टू देखिए इतना आ जाएगा, EMF विल बी इक्वल टू let's substitute here, so VB and here we are getting L2, so this is L2 minus L3 we are putting here, so this is A by 2 and plus L2 by 2, so this becomes equal to VB and this is 3L2 by 2 minus A by 2, this we get. So let us take 2 outside, so VB and here by 2 and this is 3L2. So L2 we can put from here, so we'll get here 3 and 2. When we multiply this, say 2 we have taken outside, okay, and here we get 3 and that 2 multiplies, so we get here basically 6 x primed by root 3, okay. So when you put this L2 here, okay, you get this minus and this is A. 1 by 2 we have taken outside, so that's what we have. So that is the value of V. So x prime, let us put x prime is equal to this much hai, x minus L, that will put here, and A we have to put. See, actually this vertical height of the triangle is given, okay. So if we assume side is A, see if there is a equilateral triangle and you assume side is A, then this L will be equal to, sorry, this L will be equal to root 3 A by 2, okay. So therefore A can be written as 2L divided by root 3. So let us put everything here, okay. So this is VB and divided by 2, and here we have 6 divided by root 3, and x primed is actually equal to this much, x minus L and minus A is actually 2L by, this is 2L by root 3. So we can take some common factor outside, we can take 2 outside and we can take root 3 also outside. So we will get basically here 2 will cancel out. And when you take root 3 outside, you will get VB divided by root 3. And here, we have taken 2 outside. So we are left with 3x minus 3L here and minus L here. Because 2 we have taken common. Okay. So basically, we are getting here. Now we can take 3 also outside here. So we can get root 3 VB. And here, x minus 3L by 4. That's we get. So that is the EMF. Okay, तो ये EMF निकल गया. Now you see this has positive slope, okay, and when you put see when this vertex is here, then its displacement from here to here will be equal to height of this triangle, which is equal to L. So at if you calculate at x equal to L, okay, from here you will get actually
if you put x is equal to L here, you will get minus, sorry, it will become, see, we had taken, this is 4. Okay, sorry, we made a mistake actually here. So this is not 3L by 4. It is actually 4. We have taken 4. This becomes 4. So this is 4L by 3 actually. Okay. 3 we have taken outside. Okay. So this becomes 4L by 3. All right. Now you see here. So that is the EMF. Okay. So at x equal to L, when you put x equal to L, you will get negative value here. So you get here minus VB L and divided by root 3. That is the value of EMF. This is the EMF. So at x equal to L, you get minus VBL divided by root 3. Here you see, when it was entering into magnetic field, here also if you put x equal to L, you are getting EMF equal to minus VBL or divided by root 3. तो दोनों वैल्यू मैच कर रहे हैं. Okay, that means at x equal to L, when it is entering into magnetic field and this vertex is about to reach this point, and when this vertex exits this line, okay, in that case the value of EMF is matching, so therefore EMF is continuous actually. Okay, दोनों साइड से वैल्यू मैच कर रहा है, so we can say that EMF is continuous. Okay, all right, so one thing we have figured out that EMF is continuous function of x. Okay, and another thing is that you see here slope is now positive, so we can plot it like this. So if you plot it, okay, see this part we had plotted it like this. Okay, here value of the EMF at this point is minus VBL and divided by root 3 according to this value. Okay, and when it starts exiting this coming out of this line, okay, then also value of EMF here is the same. Okay, so if you complete the graph, now slope is positive. Okay, so graph will go like this. Okay, and here you see at x equal to this point is basically 4L by 3. Okay, x equal to 4L by 3, here EMF becomes 0. Okay, and this will continue up to length 2L. Okay, after that EMF will suddenly become 0 because it will, now loop will be completely outside the magnetic field, so flux will become 0 and it will remain 0 for all time. Okay, so therefore EMF, after that EMF will become 0. Okay, तो यहाँ के बाद फिर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, या इफ यू वांट टू कैलकुलेट वैल्यू, यू कैन जस्ट पुट x इक्वल टू 2L. ठीक है, x इज इक्वल टू 2L here. So when this line actually, this line coincides with this line, this line will be at a distance 2L from y-axis. Okay, so x equal to 2L हम यहाँ पे put कर सकते हैं, तो this will become basically VB into 2L divided by root 3. Okay, तो ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे देखिए, this value, okay, x equal to 2L put करके आप कैलकुलेट कर सकते हो. This will be 2 VBL और divided by root 3. ये ग्राफ होगा. ठीक है, सो बेसिकली वी हैव व्हाट वी हैव डन, वी जस्ट सेड दैट कि जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसमें से मोशनल EMF डेवलप होगा. ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे थे कि ये कर्व्ड है ऐसे, लेकिन ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये लेंथ होगा. ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दिस लेंथ इज इंपॉर्टेंट, और EMF जो होगा सिंपली VBL हमने यहाँ पे लिख दिया. यहाँ पे इस केस में हमने ये कहा कि ये पोर्शन इनसाइड है और ये पोर्शन इनसाइड है और ये पोर्शन इनसाइड है, तो इसमें जो EMF डेवलप होगा इसमें VBL2 हो जाएगा यहाँ पे EMF, और इस पोर्शन के लिए ये लेंथ इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है ना, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये लेंथ है, और इस पोर्शन के लिए भी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये लेंथ है. ओके, तो इन दोनों को सम जब आप करेंगे ना, तो इट विल बी इक्वल टू दिस मच लेंथ L3. तो हमने ये कह दिया कि इस पोर्शन और इस पोर्शन का EMF का जो सम होगा वो VBL3 हो जाएगा. ओके, तो L3 इज दिस मच. ओके, एक्चुअली EMF जो इसमें यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इट इज ट्राइंग टू, और यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है, इट इज ट्राइंग टू सेंड करंट क्लॉकवाइज, एंड इसमें जो EMF डेवलप हो रहा है, इट इज ट्राइंग टू सेंड करंट एंटी क्लॉकवाइज. तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं. ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे फिर टोटल EMF को ऐसे लिख दिया VBL2. ठीक है, और माइनस VBL3. ठीक है, फिर यहाँ पे बस L1 L2 ज्योमेट्रिकली हमने कैलकुलेट किया. ठीक है, L1 L3 वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ L1 L3. ओके, एंड वी गॉट दिस टू बी EMF. ओके, तो ये EMF आ गया हमारा. ठीक है ना, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया. ठीक है, देयर वाज स्लाइट मिस्टेक इन कैलकुलेशन हियर.
ओके, सो दैट इज द ईएमएफ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो और बेसिकली यहाँ पे x इक्वल टू एल पे जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू जो है वो मैच कर गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं ईएमएफ का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ से हम पॉजिटिव स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, लीनियर डिपेंडेंस है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, x इक्वल टू 2l पे हमने देख लिया, यहाँ पे 2l पे जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू ये इतना आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे 2 VBL/√3। सो देयरफॉर ग्राफ यहाँ पे जो वैल्यू होगा 2 VBL/√3 होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा -VBL/√3 होगा। ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ जो कि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये ऑप्शन ए है। ठीक है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चन हियर। ओके, जस्ट द क्वेश्चन। Okay, so this was the question, you see, and these are the options given. So obviously, this option here, this option is correct actually. Okay, यहाँ पे values दिया हुआ नहीं है, but we have calculated the value also. Okay, definitely this question can be, so here you can see this is the official answer key which is given to be A. Okay, so definitely this question can be done by flux method also, but I think this is also a very good method. Okay, we can do such question by concept of motional EMF. That means basically EMF developed in a straight wire. Okay, and this concept I think in some cases works better. Okay, or provides a quicker solution than the flux method. Okay,